Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now look at this question. What is said in here? So we are provided with one diagram. You can see here. This is cylinder and this is your plank. Both have same mass. So let's say this is M, this is M. That is also mentioned in the question. And then there is thread, light thread wrapped around this cylinder and one end of this thread is also connected to the plank like this. After that, it is said that friction between this cylinder and plank is sufficient enough to prevent slipping. Okay. And then there is this external agent applying force F on the plank, because of which system will, get disturbed from the rest position. Okay. And then motion will occur. What we have to talk about, also there is one more assumption given. Length of plank is enough, very much enough, so that cylinder does not fall off it. Okay, so you don't have to worry about कि जब plank move करेगा cylinder may fall off it. No worries. Done it. In A, what we are asked, find the acceleration of the cylinder. So cylinder का acceleration क्या होगा? So we need to talk about, first of all we need to analyze motion. ये सिलेंडर जो है क्या ये ट्रांसलेट करेगा भी, रोटेट भी करेगा, एंड व्हाट विल बी द मोशन ऑफ दिस प्लैंक. If this will move, then it will translate definitely. So we will explore all these things. So let's start with this one. देखो, सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन में कहीं दिखता है ना, there is no slipping happening, then we hurry into thinking that okay, that thing will basically roll. It will be in pure rolling. But it is not always the case actually, and that is not the case over here that I will show you. So देखो, let's say कि यहाँ पे ये pure rolling कर रहा है. Done it. In that case, you will say that this has a center, its center of mass will have acceleration ACM, and it will also rotate. So let's say it is rotating in this sense with angular acceleration alpha. Let's say, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस पॉइंट का आप एक्सेलरेशन निकाल लो, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है. And because of this F force acting on the plank and also tension will operate. Because of all these factors, what will happen? This plank is, let's say, moving in the forward direction with acceleration A. Now let us talk about relating A, alpha and ACM. So let's talk about constraint basically. अब देखो ये जो plank है, this is connected with the help of thread directly to the top point of the cylinder. So what will be the whatever will be the acceleration of top point of cylinder will be the acceleration of this plank, right? क्योंकि दोनों कनेक्टेड है. तो आप ध्यान से चेक करो अल्फा और एसीएम के टर्म में व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट. सो बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन विल बी एसीएम, एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन, रोटेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इट्स value will be alpha r and in the same direction as that of ACM. So this is equal to alpha r plus ACM, and this must be equal to A, acceleration of Planck. ठीक है. अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन है क्योंकि हमने प्योर रोलिंग लिया है. अगर ऐसा लिया है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे वट एवर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट will be equal to the acceleration of Planck, right? Then only relative acceleration will become zero, because if no slipping is happening, then relative thing has to be zero. So इस point का आप acceleration निकालो. Because of rotation it is in this direction, because of translation it is in this direction. So this is equal to alpha r minus ACM, and this is equal, this should be equal to A. Otherwise slipping हो जाएगा. Done है. अब देखो क्या ये दोनों इक्वेशन होल्ड हो सकता है एक साथ? नहीं हो सकता ना, बिकॉज first equation says that A is sum of two same digit, and second equation says that it is difference of two same digit. It is not possible, right? एक को zero होना होगा. Either ACM will be zero or alpha will be zero. Then we may hold it true, right? So कौन सा जीरो होगा, दैट वी नीड टू एक्सप्लोर. उसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पे अब इसका FBD लिखो. सो FBD आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो किसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, प्लैंक को. सो प्लैंक के ऊपर फोकस करो आप. F फोर्स लगा, and the moment force will act upon it towards right direction, it will have tendency to move towards right, and then this cylinder surface in contact with the plank will try to stop it. ठीक है. सो ये सरफेस इसको रोकेगा क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है वो आगे जाना चाह रहा है, because of this a force getting applied, right? So friction will operate here and it will try to stop it. In order to stop it, friction will act or oppose it. It cannot stop क्योंकि यहाँ पे F is sufficient enough to disturb this system, okay? But friction will act, it will try to oppose it.
ये मैक्सिमम कोशिश करेगा, राइट? सो एफ विल एक्ट। अब देखो यहाँ पे एफ लगा, और क्या फोर्स लगेंगे? टेंशन फोर्स। सो क्लियरली वी कैन सी दैट प्लैंक के लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हो देन यू विल राइट एफ माइनस टी विल बी इक्वल टू हाउ मच? एम ए। डन, दिस वी कैन राइट। अब चलो बात करते हैं सिलेंडर की, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिलेंडर पे देखो एफ का रिएक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन द सिलेंडर इन दिस डायरेक्शन एंड देन टेंशन विल एक्ट इन द दिस डायरेक्शन. So forces acting on cylinder are in opposite directions, right? So there is chance that F net on cylinder can be zero. It can be zero, right? You can write it can be. बट टॉर्क की बात करो, अराउंड सेंटर ऑफ मास आप टॉर्क निकालो, टेंशन का टॉर्क निकालो, सो आर क्रॉस एफ एंड देन आर क्रॉस दिस फ्रिक्शन का टॉर्क, बोथ आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो टाउ नेट अगर हम निकालते हैं इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. और अगर ये कैनॉट भी हो सकता है देन अल्फा कैनॉट बी इक्वल टू जीरो. सो we will have to make ACM equal to zero. यानी कि this cylinder will purely rotate, it will not roll. Okay, so यहाँ पे आपको क्या निकालना था? acceleration of cylinder, it will be zero. ठीक है, so acceleration that is ACM is equal to zero. Then so what will be the what will be the acceleration of Planck over here? Let us talk about that. So आपने इक्वेशन लिखा ना, अब देखो सिलेंडर का फोर्स इक्वेशन आप लिख लो, इधर टेंशन T है एंड दिस साइड इज फ्रिक्शन. सिलेंडर के लिए फोर्स इक्वेशन लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि ACM इज जीरो, सो लेट्स नॉट राइट दैट. टॉग इक्वेशन आप लिखो. सो बोथ टॉग आर एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट्स ऐड इट. सो T plus F into R is equal to mr square by 2 alpha. ठीक है, so this is your this. What will be the thing? T plus F क्या दिख रहा है? T plus F is equal to mr alpha by 2. अब देखो अल्फा है और प्लैंक का एक्सेलरेशन हमने ए लिया है. अल्फा और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? देयर इज नो स्लिपिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट? सो इफ देयर इज नो स्लिपिंग इट मींस this point of cylinder is having whatever acceleration because of rotation. So because of rotation it is having acceleration in this direction. Alpha r should be equal to the acceleration of Planck, that is a, right? So a will be equal to alpha r. So यहाँ से alpha r को आप a लिख लो. This will become ma by 2. Let's call it equation 2. Equation 1 हमारा क्या था? Equation 1 was this one. अब देखो इस equation को अगर आप लिखो, आप क्या लिखोगे? You will be writing this as f minus t plus f is equal to ma, and t plus f is equal to ma by 2. So this will become equal to 3 ma by 2. So acceleration of Planck also you can calculate 2f by 3m. ठीक है, सो दिस इज हियर. अल्फा को आप लिख सकते हो, आप अल्फा क्या है तुम्हारा? अल्फा है a by r, so 2f by 3mr. Sorted. In the next part, what we are asked, find the kinetic energy of system after time t. So initially it has no kinetic energy. After time t, this Planck will have velocity. This cylinder will have omega. So kinetic energy will be equal to half mv square translational kinetic energy of Planck plus rotational kinetic energy of this cylinder. ठीक है, so चलो velocity निकाल लेते हैं as a function of time t. So v as a function of time t क्या होगा? v equal to आप क्या लिखोगे? U plus AT. Initially system was at rest, so U is 0 and this will become A, that is equal to 2f by 3mt. Similarly omega क्या होगा तुम्हारा? Omega naught plus alpha t. Omega naught was 0, alpha into t, that is 2ft by 3m, sorry 2f, this is t, okay, 2ft by 3m. ठीक है, 3mr है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए नहीं तो गलत आ जाएगा. चलो वैल्यूज को पुट करते हैं. सो हाफ m v का स्क्वायर, सो 2f by 3m एंड हियर देयर वाज t का स्क्वायर प्लस हाफ i का वैल्यू क्या लिखोगे? mr स्क्वायर by 2 into 2ft by 3mr का स्क्वायर. This is what we are going to do. Done it? Now let us write it. So half m, this is 4f square t square by 9m square. ठीक है, and this will be equal to how much? Half. This is your m r है, यहाँ पे r का स्क्वायर r के स्क्वायर से कट जाएगा. ठीक है, so यहाँ पे half into इसको 4 लिख लो and this will become 4f square t square by how much? This is going to be equal to 9m square. Okay, so यहाँ पहले से m भी था.
चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो. सो 1 m will get cancelled and this 2 will get cancelled. So what value you are going to write here? So यहाँ पे होगा 2f square t square by 9m plus 4 will get cancelled. So this is f square t square by 9m. So this is equal to how much? 3f square t square by 9m. So this is equal to f square t square by 3m. This is going to be your answer for the second portion. Then I hope you have understood this question, but if you have doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself and keep on solving more number of questions. Bye bye.